अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि इंग्लिश ऐसे, और हमारा टॉपिक है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर आज हम एक कंप्लीट आपको पैराग्राफ लिख के देंगे। 1 पेज पैराग्राफ होगा ऑलमोस्ट। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसा टॉपिक है जिन पे तमाम स्टूडेंट्स को एक ऐसे चाहिए होता है। सो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ली जाए, और इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट उन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर पैराग्राफ लिख के देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने स्टार्ट से लिखना है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। कायद आज़म इज़ आवर नेशनल हीरो। He was born in Karachi on 25th December 1876. His father's name was Punja Jinnah. He got his early education from Karachi. Then he went to England for study of law. He thought for the rights of the Muslims of the Muslims. He was very hard-working man. Very hard-working man. He worked hard for separate homeland. For the Muslims. Finally, Pakistan came into being. Finally, Pakistan came into being on 14th August 1947. Quaid Azam is the founder of the Pakistan. And father of nation. He died on
11 सितंबर 1948 1948 his tomb is in कराची। तो ये था हमारा कायद आज़म पे ऐसे इंग्लिश में, और हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो टॉपिक था इस पे आपको एक कंप्लीट हमने पैराग्राफ लिख के दी है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।